And we're rolling, Mr. Basha. तो कल का मैच के क्या तासुरात हैं? आई थिंक मैं वो जो मीम्स देख के ना आई थिंक तंग आ चुका हूँ. इतनी मीम्स तो मैंने आई थिंक किसी मैच के बाद भी नहीं देखी. But very very disappointed, yeah. I mean, I don't know where to start and where to end. But अभी भी मेरा तो ये है, मैं obviously I'm तो got some vested interest in this because मैं Wednesday को fly कर रहा हूँ to watch the Pakistan South Africa game. So I'm still hopeful. मैंने calculations किए हैं कि obviously if we win out, I think we still have a good chance. You think you have a good chance? If we win out, and that is a big if. But I mean, to be honest, they haven't got their 11 right. They had poor decision making in terms of not batting first, as an example. और जो planning होती है in terms of how you chase, even Duckworth Lewis के हिसाब भी अगर आप रख के चलते, तो you would have had a different approach to the game. तो जो administration है, coaching है, even Sarfraz for himself, वो जो planning है वो बिल्कुल lacking नजर आई है. So I have no doubt कि the team is talented, right? So let's not take that away कि team में talent नहीं है. I think they have the talent that needs to be, you know, used in the right way. And you know, obviously जो pressure situation है, जो game का tempo है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं. बहुत मुश्किल है ये turn around करना in a such short period of time. History also tells us कि we've lost obviously so many games this year. तो कोई हमारा वो momentum तो था ही नहीं. तो to even see us make the semis would be a big if, big plus. yeah, so my thing is, for the first time or after a long time, I think the collective intelligence of the team is missing big time, and I am not too hopeful because of the decision making pattern. So what I usually look at, when I'm kind of analyzing this situation is, what is decision making pattern? Are they making right decisions? Because sometimes you make right decision and you still lose. That has happened a lot of times. कि प्लेट नहीं चल रहा है आपके पास जो भी है. इधर जो डिसीजन मेकिंग पैटर्न है वो मुझे लग रहा है कि आप जिस तरह के डिसीजन ले रहे हैं आप शायद सोच ही नहीं रहे. मतलब to be very, I still go back to Afghanistan 49th over, you could still win it and save some grace, and Sarfraz chooses to bowl Shadab, then not batting. When was the last time you actually won a match against India chasing? Never. Then picking up the wrong side. The decision making pattern to me is reeking of cowardice. I just playing Shoaib Malik was always a question mark. जब वो इतना बड़ा break बीच में आ गया था, then he left for his personal issues. God knows what those issues are, but clearly he's not in it, and he looks that he's out of it. फिर भी उसको खिलाना, and the guy who scored 200 in Australia, उसको बिठाना, seems like the decision making is malfunctioning somewhere. Someone somewhere is not thinking clearly. तो उसको रखते हुए मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है. And to be very honest, if some Farista Jibril came down and said, listen, press this button and Pakistan will qualify, I wouldn't press this button. I actually sometimes I feel kick in the pants is better than pat on your back. And I think it's high time. You still have got 4 years, before the next World Cup. You have to sort some things out. इस तरह से नहीं चलेगा. छोड़ दे यार planning. मेरे हिसाब से तो यही है team. You got to support what you have. आपका मुल्क का हाल देखें, टीम का हाल देखें, बात एक ही है. Exactly. वही बात है. It's a tough environment. But करनी पड़ेंगे. That's what I think. I don't think this. Yeah. I mean, when you say this is your best lineup, and I believe this is the best lineup, that's a big question mark. Really, is this your best lineup? If these guys don't work out, who do you have? So I want Sarfraz to go out, but what is the next keeper? Do we have him? We don't. Rizwan. Simple. Yeah, I mean, it's not that you have Dhoni. It's not that you have Dhoni on the brink of retirement. मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि जो अभी टीम का टैलेंट है ना, this is your best talent. I think आपने PSL में भी देख लिया, इसमें भी देख लिया. जो आपका domestic structure produce कर रहा है वो this is the best of the lot. Now अगर आप बात करते हैं fundamentally changing the domestic structure and investing in it, this is a long term thing. आप फिर literally आप
अब शुरू करें तो शायद आपको नेक्स्ट वर्ल्ड कप का रिजल्ट मिलेगा. So those are more fundamental issues, and the game has become obviously much more organized, much more professional. कि वो जो natural talent वाली हमारी हमेशा होती थी कि natural talent पे we'll win games, वो अब marginalized हो गई है because everything is so professionally done. इसमें आपकी analysis हो गए, insights हो गए, biomechanics हो गए. There's so many different things that come into play. Um, कि it has to make a difference in terms of the top sides and us. बहुत बड़ा margin हो गया है, and it's very evident on the field यार. um, जब आप इंडिया जैसी टीम से खेलते हैं, उनके आप फिटनेस लेवल्स देखें, हमारे फिटनेस लेवल्स देखें, it's a big difference यार. तो वो गैप जो है वो कम करना is going to be hard. It's not going to be easy, but talent फिर भी है. Like Babar Azam has the talent to be a great player. बस वो जो एक्स्ट्रा स्टेप है ना टू बी ग्रेटनेस वाला, वो नहीं है, वो नहीं नजर आ रहा. कितने प्लेयर्स पिछले 5 साल आए जो टैलेंटेड थे. एट वन पॉइंट टाइम was he had a label कि यार talented player and he was talented. डर मुझे यार कि आप टैलेंट के लेबल के ऊपर सब कुछ खो ना दें, और ये हो सकता है, ये होते हुए आया. जहाँ तक फिटनेस की बात है, I think that's a personal choice. I mean, if these guys can't afford a personal membership to a gym and go work out like other players do, then I think that's a big problem. मेरा मसला is gratitude. I'm not upset that they lost to India. That wasn't the first time. We're 7-0 down, in World Cup against India. तो हारने की बात नहीं है. बात ये कि यार एक तो किस तरह से हार रहे हैं, और आपकी कोई सीरीज नहीं है. You're yawning and I know you're human, you can yawn, but बट स्टिल यार, मुझे टीवी, मुझे अपने अपार्टमेंट में खड़ा बैठ के मैच नहीं जीत सकता, और आप कैप्टन हैं पाकिस्तान के, आपके पास इतने you've got things to do and you're yawning. That shows the intent. That's the problem. Yeah, no doubt. I think Sarfraz has his issues. मुझे भी उसकी captaincy, I thought he was pretty street smart. उसकी captaincy, having, especially कराची से कितने बड़े street smart cricketers निकलते हैं कि उसमें है, he has the ability to lead and ability to make the right choices. But you're right, he hasn't actually chosen, made the wise decisions on the field. फील्डिंग या बॉलिंग चेंजेस, वो यार कोहली कोहली जब आया है, हु वाज बॉलिंग, वहाब बिन हसन. जब वो 2 ओवर खेल चुका था उसके बाद आमिर आया. आई वाज लाइक, हाउ कैन यू नॉट, एज मी एज अ नॉट अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, मुझे पता है कि द मिनट कोहली कम्स, यू ब्रिंग ऑन आमिर द वेरी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यू हैव. rather than doing that, he brings in Hassan, जो पिट के लास्ट 5 मैचेस में पिट रहा है, कब से पिट रहा है, उसको आप ले आए हैं. और वहाब रियाज को, चलो वहाब फिर भी मैं कहता हूँ एक एंड से दूसरा वहाब ले आओ. बट हाउ कुड यू बोल somebody else before आमिर? 2 ओवर जब कोहली ने खेल लिए, उसके बाद आमिर आया. आई मीन बेसिक्स यार, बेसिक्स ही हैं बेसिक्स. बैट कर 7 मैचेस हुए हैं, 6 मैचेस हमने पिछले खेले हैं, उसमें से हम 5 हारे हैं चेसिंग, सिर्फ एक इंडिया जीता है चेसिंग. जो प्रेशर होता है चेस का इज डिफरेंट बॉल गेम यार. सही है, डकवर्थ लुइस probably उनके दिमाग में था, या नमीनेस इन द पिच, डैम्पनेस, whatever you want to call it. बट अगर डकवर्थ लुइस के इशू था जो आया, इट केम इनटू प्ले. बट देन आल्सो इफ यू न्यू, आजकल के वेदर फोरकास्ट में आई कुड टेल यू कि 6 बजे बारिश होगी. Literally, it is that precise that you know exactly when it's going to rain. And if I know exactly when it's going to rain, then you know कि डकवर्थ लुइस के हिसाब से आपको कितने रन चाहिए और आपको विकेट्स बचा के रखनी है, बिकॉज डकवर्थ लुइस में विकेट्स का ना गिरना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो ये जो बेसिक्स हैं वो यार, वो तो सही करो कि बिफोर यू एक्चुअली गेट ऑन द फील्ड. वो ही नहीं हो रही, तो कोच अजहर महमूद, Mickey Arthur not giving you 11. I mean, these are things you don't even, before you even get on the ground, you should get right. वो नहीं हो पा रही. Yeah, और तीसरा के जो variables in Duckworth Lewis, बारिश हो गया, थोड़ी सी घास है, you make those decisions when you can do everything well, and then you decide यार मैं chase भी कर सकता हूँ, मैं पहले batting भी कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ कि ज़्यादा what makes more sense to me. You can't chase. So I don't know why you're Simple. trying. Simple. That's the starting point. Duckworth Lewis, all those things matter if you have 8 batsmen who can actually win you a match.
You don't have those. All you आप पांच बैट्समैन के साथ जा रहे हैं इसका मतलब भी कि आप डिफेंड करेंगे. That's as simple as that. ठीक है, your strength is bowling. So I just don't know what he's smoking, to be very honest. I'd like to smoke what he's smoking. But I also think I wouldn't have played Malik. वो कहते हैं experience but यार experience कहाँ आपको लेके आया है, कहीं नहीं लेकर आया है. I would have rather gone with the younger talent. हारिस था या आसिफ भी था. आसिफ को भी नहीं खिलाया यार. आसिफ ने 250 350s किए हैं इंग्लैंड के खिलाफ. He was in good form. उसने एक poor performance रही है, but you got to back the youngsters as well यार. Experience तो काम कर नहीं रहा. हफीज भी blows hot and cold. Um, Malik तो completely out of form है यार. वो तो he looks so out of form. Even in the field he looks so out of it. कि I'm sure कि आप nets में जब practice करोगे तो you can tell he's not in nick यार. How could you play him? तो वो Malik, bad decision था. I would have played Haris Sohail. Yeah, I would have played Asif. I would have played Uh, Asif also, yeah. yeah, either one of them यार. उनको chance दो. अब for me, Shoaib's played his last one international of his career. He's done because he was supposed to retire after the World Cup. उसकी retirement हो चुकी है मेरे हिसाब से, because I don't think he has the capability right now. और उसका इतना confidence level अब low हो चुका है कि I don't think he will be able to make a comeback, not in this short period of time. Shoaib Malik's average in England is 13. So Exactly. if you It was look at always a question mark. Huh? so his average is so Stuart Broad is averaging around 12, 10, 11. Jimmy Anderson is averaging around 11, 10 in England. So uski average जो है वो Taylor से मिल रही है. And that's past data. So everyone knew about it. फिर भी आपने उसको खिलाते रहे. To me, I think you've almost lost the tournament. I think to me you're out. अगर आपने अब यहाँ से कुछ ट्राई करना है, I would play Haris Sohail and Asif Ali. To me, Hafiz and Shoaib Malik, they're done. Last two matches against Australia, when you get out of Finch on a full toss, and against India when एक juicy left पे आपने एक ऐसे flick कर दिया catching practice कराते हुए. That sums up Hafiz's career. It's, as you said, hot and cold. Yeah, I mainly we knew coming out of this game, either they'll perform well या wholesale changes होंगी. so तो अब yeah, मेरा ख्याल है कि it's very unlikely कि they make the semis, because semis के लिए भी हमें न्यूजीलैंड को हराना है, साउथ अफ्रीका को हराना है, बांग्लादेश को हराना है. These three teams right now for me rank above us. So अगर हम ये तीन मैचेस जीत जाते हैं तो then probably I would still argue कि चलो we may be deserving of the fourth position. तो अब जो हम मैचेस खेलने जा रहे हैं वो हम फोर्थ पोजीशन की मैचेस ही खेल रहे हैं, बिकॉज वी आर कंपीटिंग अगेंस्ट द टीम्स दैट आर इन द रनिंग. और बांग्लादेश को आपने आज देखा वेस्ट इंडीज को हराते हुए. दे शोड अस हाउ इट्स डन. 320 रन उन्होंने चेस किए 40 ओवर में. तो दे taking off and have really become a strong sort of cricket team, having all the experience, Tamim, Saqib, Mushfiqur, महमूदुल्लाह एंड ऑन द बॉलिंग से उनके भी बड़ा स्ट्रांग बैटिंग लाइन है. तो मेरे हिसाब से उनको हराना मुश्किल होगा. तो अगर हम कर सकते हैं तो ये चार मैचेस है, वरना तो मैं साउथ अफ्रीका के मैच पे जा रहा हूँ. अगर उस पे हारे तो मैं कहूंगा मेरे साथ ही घर वापस चले जाएं. तो आपके साथ अलग लगाएंगे क्योंकि एक साथ नहीं जाएंगे कोई भी. वो यूजुअली हमेशा ये होता है कि अलग अलग, एक लाहौर लैंड करेगा, एक इस्लामाबाद, एक कराची. But I want to quickly talk about how can you qualify? I mean, how can you qualify when New Zealand is way ahead of you? I mean, they need 4 washout matches essentially. That's all they need. They don't even need to win. Well, they have 5 games left, right? And they're Yeah, at 7 points. So simple math ये है कि 5 गेम है, उनमें से उन्होंने 2 जीतने हैं, तो वो 11 पॉइंट्स पे आते हैं, 2 पॉइंट्स ईच. सही है. अगर वो 3 हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हार जाएं, इंग्लैंड से हार जाए और हम हरा दें, सही. दोज आर द 3 लॉसेस. 2 मैचेस वो जीतेंगे साउथ अफ्रीका से और वेस्ट इंडीज से. तो अगर वो ये कर लेते हैं तो 11 पॉइंट्स पे आएंगे. 11 पॉइंट्स पे फिर वो रन रेट पे बात आ जाएगी. जो हमारा रन रेट है और उनका रन रेट, हमारा रन रेट बहुत बुरा है. तो उस मुकाम पे आके मैथ बैठती है कि फिर रन रेट पे आ जाएगा. नाउ इफ वी कैन बीट अफगानिस्तान हेवीली, इफ वी कैन बीट बांग्लादेश हेवीली, which which are both ifs, तो हम 11-11 पॉइंट पे आएंगे. बिकॉज हम 4 मैचेस जीते हैं तो हम 8 पॉइंट लेंगे. हम 3 पे हैं, 11-11 पॉइंट पे दोनों टीम्स आती हैं. और फिर रन रेट पे आता है. फिर भी बहुत मुश्किल होगा बिकॉज आवर रन रेट इज द वर्स्ट आउट ऑफ द 10 टीम्स. yeah. तो ये है सिनारियो. Bangladesh, on the other hand, having beaten South Africa, having beaten West Indies,
actually has a leg up. And बांग्लादेश न्यूजीलैंड का जो गेम था वो इतना क्लोज था और वो बांग्लादेश हार गया, but Bangladesh still has an opportunity to beat one of the other big teams they haven't played. And and even Pakistan, अगर वो पाकिस्तान को हराते हैं, they'll through, or they can get through as well. So right now I think it's really a race between New Zealand and Bangladesh, and we are a long shot, unless of course न्यूजीलैंड का वॉश आउट्स होते हैं और वो बिल्कुल ही नहीं जीतते, बिकॉज न्यूजीलैंड का जो टफ फेज है वो अब शुरू हो रहा है, उन्होंने जो आसान मैचेस थे वो सारे खेल चुके हैं, जिस तो तरह ये है बहुत सिनारियो। हाँ पॉसिबिलिटीज है, हम पहले भी चीजें इस तरह की हो चुकी है। I'm just I don't think we deserve to go through it. That's my thing. As a neutral analyst, I don't No, think we I mean, I don't disagree with you. deserve. Okay, but are we deserving versus Bangladesh and New Zealand? Probably not against New Zealand. Probably not against Bangladesh in this state. But if we beat them, so हम बात करें 4 मैचेस स्ट्रेट जीतने की, which is a long shot. उसमें से आप बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हराओगे, साउथ अफ्रीका को भी हराओगे, ये 3 गेम आसान नहीं है, अगर आप इनको हराते हो तो यस यू डिजर्व टू गो थ्रू, which I don't think will happen. हम एक इनमें से एक मैच तो हारेंगे, one more match and you're completely done. अभी भी अगर आप विन आउट करते हो तो you're at the mercy of the other results. Other results, yeah, there are a lot of ifs and buts, but Lots of ifs and buts. एक आध भी बारिश हो गई तो we're probably completely gone. chilling. Let's see. It's not easy to support Pakistan. So भाई हाई एंड लो है, मैंने अभी भी पाकिस्तान की शर्ट पहनी हुई है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम गालियां देते हैं, हमेशा हमने गालियां दी है। मैं एशिया कप फ्लाई करके दुबई गया हूँ पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने, एंड इट वाज ऑलमोस्ट एन इक्वली इक्वल परफॉर्मेंस थी उस पे भी जो हमने कल दिखाई है, तब भी मैंने गालियां दी थी, और अभी भी मैं पाकिस्तान की शर्ट पहन के बैठा हूँ, बल्कि आई एम फ्लाइंग टू लंदन टू वॉच द पाकिस्तान साउथ अफ्रीका गेम, एंड I'll still support them of course, अपनी टीम में जो भी है, गालियां हमने कल बहुत दी हैं, पूरी कौम ने गालियां दी हैं, और वो बहुत अंडर प्रेशर होंगे, बट आई थिंक एटलीस्ट ये 2-3 और जिन्हें आप थोड़ी सी अपनी इज्जत बनाएं, you know keep your stature a little bit, keep your head in the game. I think जो भी minimal chance है, let's still go for it, give it your best. I still think they have a talented team, थोड़ी decision making अच्छी हो, planning अच्छी हो, तो they can do. I mean इंग्लैंड को भी हराया है, वो तो लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड है जो टीम घटिया जो हमसे हार गई, they okay. have but I think again on the day, जैसे कहते हैं पाकिस्तान is unpredictable, पर अब हमें unpredictable side पे करना होगा, 4 मैचेस जीतना एक साथ is not being unpredictable. Honestly, But this is where corner tigers were, obviously yeah, made that's इसी सिचुएशन पे हम 92 वाले वर्ल्ड कप में अगर आप देखें जो सीक्वेंस था ऑफ विन्स एंड रेन आउट्स का, तो इट्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, अब eight. इससे पता चलेगा, बट एक बड़ा फर्क है कि इंस्टेड ऑफ इमरान खान लीडिंग, इट्स सरफराज लीडिंग, तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, I think that's a massive gap. बट मैसिव गैप, बट स्टिल लेट्स सी क्या होता है. आई एम स्टिल होपफुल, ऑब्वियसली आई विल गो support them in person at Lords. So I'm quite excited about that. Yeah, it'll be an I experience hope they put a nonetheless too, yeah, and it'll definitely be an experience. I it'll hope still they be do a well, yeah. I still it'll hope still be a good game they because the way South Africans are playing, I think it'll be a good game if you continue to play the way we are playing and the way they have been playing. It'll be a good game. On England, I just want to say that whatever we did against England, जैसे हम जीते हैं, वो हमने we chose to not do those things. So after England, we changed our team combination. We didn't have to. we didn't have to. We did not bat first after England, and we chose not to bat first. That's where my problem is. कि हम उस तरह वही के मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो आप अभी मैच शुरू नहीं हुआ उससे पहले ही आपकी जो डिसीजन मेकिंग है फ्रॉम योर स्टार्टिंग 11 टू योर टॉस करके क्या करना है, दैट काइंड ऑफ थिंग बेसिक्स आप, मतलब उसी में आप रह रहे हैं, तो आगे आप compete करना तो दूर की बात है. देखें, hopefully we're forced. सिर्फ वहाँ प्रयास ने जब डेंजर जोन में बॉलिंग कराना शुरू किया और एम्पायर ने इसको कहा कि यार नहीं, I mean he had to change the side. I was Yeah. telling my brother, यार hopefully I hope this is a blessing in disguise because they clearly had to change something, and he did, and we got our first wicket. So hopefully we lose five tosses, and they put into bat first,
and hopefully Shoaib Malik and Hafiz are injured, and then we have to play Haris and Asif. तो उस तरह के जो बहुत सारे ifs and buts जो hopes भी है ना कि यार आप सरफराज को कोई divine intervention हो कि वो decisions ठीक ले, because तो right now it's struggling. या ऐसी चीजें हो कि वो डिसीजन उनके लिए बनाई जाए बनाए कि उसके जाए. पास ऑप्शन ही ना होगा और कोई हाँ. but Amir still looks a class apart bowling wise यार क्या बंदे ने रिटर्न किया है although I still think कि 300 पे जो उसने विकेट्स लिए हैं कोहली को भी आउट किया है fine he got probably the score down from 350 360 to 330 but he has to take wickets up front. But his biggest problem for me is that बेचारा वो एक एंड से इतना प्रेशर करता है दूसरे एंड से इतना रिलीज होता है कि they just play him out. If he That's the had thing. a little bit of support from the other side, I swear Amir would have been taking 5 wickets every game. Absolutely. He's probably the best bowler right now in the competition in terms of wickets also and quality. You need to bowl in tandem. You can't just rely on one भाई fast. वो ये कह रहे हैं ना वसीम बक्कार का combination was so deadly because उनका आपस में competition था and because you had pressure from both ends. तो वो respite मिलता ही नहीं था किसी batsman को. And it's such a huge difference, यार. Huge difference. And Look Hassan at Ali for me even also looks way out of color. I think it's time for him to also maybe take a one game's rest. Ab Hasnain ko khilaye. Hasnain or Shaheen Shah, whether I mean, take your pick. यार Afridi, please. I'm also sort of done with Afridi. वो बहुत ज़्यादा पिटा है यार for the last couple of games. I think Hasnain को लेके क्यों गए हैं फिर? उसको bench क्या वो गर्म करने के लिए लेके गए हैं? Practice कराने के लिए nets में. England return ball again. You need a Chotu to keep it warm. Chotu to keep it warm. Yeah, but let's see. Let's see. I think it's an interesting spin that you're putting on. They can still qualify. Let's see. I mean, Very marginal. but Very marginal. I mean, if New Zealand beats one of the big teams, then it's all over. So, or they win or they win 3 games. Washed up. They win, huh? Yeah, If against they win Australia. 3 games, it's over. Yeah. So it's heavily in favor of New Zealand, and rightly so. Let's see. I'm more interested in what they do after this, to be very honest. I'm just curious. I want to see what happens. मेरे हिसाब से Mickey gets gone. Andy Flowers should be gone. Azim Mahmood should be gone. ये 3 तो पक्के हैं. I think it's about Hafiz and Malik both retire for sure. Sarfraz is a question mark. I think I'm not sure he probably stays captain anymore. And there'll be wholesale changes. I mean, those are probably guaranteed for me. In terms of overall up start from scratch getting per se. we'll So talk I think about still that at length actually once the competition is over. next loss जो होगी ना उसके बाद हम ये बात करेंगे कि अब करना क्या है आगे because it was completely a one-sided game. आप थोड़ा सा भी compete करते ना तो आपको इतनी गालियां नहीं पड़ती जितनी आपको गालियां पड़ी हैं they are from the bottom of the heart है लोग इतने जज्बाती हैं और इतने emotional हैं and we have such a strong link and love for the game and love for the team that we want them to win. ये सब प्यार की निशानियां कहते हैं जिसको कहते हैं तो For sure. it is the passion that you have for the game in Pakistan कि उतनी ही आपको गालियां भी उतनी जोर से निकलती हैं पर हम उतना ही सेलिब्रेट करते हैं जब वो कुछ जीतते हैं या चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो छोटी छोटी खुशियां कहते हैं ख्वाब अधूरे सही सहारे तो हैं पर हम सहारों पे ही रह गए ये ख्वाब कोई पूरा नहीं होने वाला वर्ल्ड कप वाला ना इंडिया को हराना ना वर्ल्ड कप जीतना तो दूर की बात है No, the Chinese is saying if you continue to do what you've been doing, you'll get what you've always been getting. तो अगर आप इसी तरह से चलते रहेंगे इस तरह चल रहे हैं Wasim Akram to finish this off had a great point. He said, listen, and he was upset. And I say Wasim Bhai for next coach, by the way, that's a separate discussion on other podcast. But he was saying, यार आपने India plays a lot of Ranji Trophy. ठीक है, we only see IPL, but we don't see the amount of work these guys put in playing Ranji Trophy. Even Virat Kohli and these guys. Yeah, it's a very popular tournament. आपके players जो वो hero बने कोई Caribbean में खेल रहा है कोई इधर खेले. I mean, I'm not against that. But he was saying यार कोई NOC नहीं मिलेगी तुमको अगर तुम domestic नहीं खेलोगे तो. मतलब वो basics जो आती है ना हम जो basics की बात कर रहे हैं वो basics आपको IPL में या PSL में एक लिमिट में आती है असल basics आपको टेस्ट मैच खेल के there's a reason why you call it test match. I'm not saying you have to bat like a test player
but then the whole strategy और game सोचना आपको जो एक meditative किस्म की form of cricket है वो कि आप 4-5 दिन से cricket खेल रहे हैं तो वो आपकी सोचने की skills sharp कर देता है and I think we're clearly missing that. You can see that. So things have to change, but let's see. I think we've been beating the dead horse. Hopefully someone will listen. I'm really hoping that Imran Khan, who understands cricket, will do something. But let's see. We've got bigger fish to fry. Let's see, man. Hope for the best. But I guess I'll touch base with you from Lords. जब मैं in the ground होगा, I shall hook up with you live from the Lords Stadium. So that'd be That'll be that'd be great. interesting. Yeah, it's on my bucket list to watch a game in Lords. So मैं वो देखने जा रहा हूँ, and it'd be great fun. I think it'd be a great to be there in person actually and watch a Pakistan game. That's what I'm looking forward to. Of course, bonus होगा अगर Pakistan जीत जाता है, and we start. Hopefully, it's the start of a winning streak, and then other games go our way. So let's see. Hope for the best, but chances are slim. Let's see. All right. I hope for you that they win. Yeah, at least South Africa वाला गेम यार, इतना मैं दूर जा रहा हूँ, पैसे खर्च कर रहा हूँ, मेरे का एक डॉलर खर्च करने वाली टीम नहीं है, but खैर फिर भी I shall still go ahead and not cancel the trip. All right, I was buddy. pretty close. कल रात को पूछते थे, मैं कहता कि यार बाहर में जाए टीम, मैं नहीं जा रहा, but after the dust is settled, फैन है, जा रहे हैं. Let's see. Hope for the best. All right. Good luck. All right. See you then. Bye.